what is a hybrid. Okay, so we will see what is a hybrid. Till here we have just discussed the what is the need of EVs and HEVs, how HEVs are better than EVs. Okay, but we should know what is a hybrid first of all. Okay, so if you talk if you look for the definition, the definition says a hybrid vehicle combines at least any two power source to propel it. ओके, तो सेंटेंस अगर हमने देखा तो वहां एम्फोसाइज हमको देना पड़ेगा ज्यादा, टू पावर सोर्सेज टू प्रोपेल इट एटलीस्ट। ओके, सो मिनिमम हमारे पास दो पावर सोर्सेज चाहिए हमारे व्हीकल को प्रोपेल करने के लिए। सो वो दो पावर कुछ भी हो सकता है। हम आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड, ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे हम प्रमोट करते हैं उसको, सो इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें रहेगा ही, बट इन एडिशन टू दैट यू विल हैव अ अल्टरनेट सोर्स। in addition to electricity you have the alternate, so that is called as a hybrid electric vehicle। but यहाँ हम क्या बोल रहे हैं सिर्फ hybrid। so I am not sure कि the first power source है इलेक्ट्रिक है या दूसरा है, और सेकंड पावर सोर्स इलेक्ट्रिक है या दूसरा है। so any two, okay, so the hybrid vehicle combines at least any two power source to propel it। so यहाँ जो है the first जो diagram दिखा है, in that diagram you can say it's a pure electric vehicle। in the case of the pure electric vehicle you have a battery as a fuel tank, okay, which store the electricity, okay, which store the potential। उसका कैपेसिटी होता है किलोवाट आवर में, आर में हम उसका कैपेसिटी टर्म करते हैं। ओके, बैटरी का कैपेसिटी किलोवाट आवर या वोल्टेज में। ओके, so this is the battery, after that it is a mg is nothing but the motor or generator। okay, motor slash generator and drive shaft और आपका ही wheel। so this is a pure electric vehicle। if you talk about, if we term about the hybrid, then hybrid will have a gasoline engine। now here instead of gasoline engine some other thing also may be there, it may be a fuel cell also। okay, नॉट ओनली गैसोलीन, यहाँ फ्यूल सेल भी हो सकता है। नॉट ओनली फ्यूल सेल, यहाँ ह्यूमन बींग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल देना होगा, सो देर आर द सम व्हीकल एग्जिस्ट प्रीवियसली जिसमें फ्यूल खत्म होने के बाद यू कैन पेडल इट। ओके, देर आर सम टू व्हीलर्स अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट कि वंस योर फ्यूल टैंक इज एम्प्टी then you can pedal it like a cycle, like a bicycle। okay, so those vehicle can be termed as hybrid because two power source is available to propel it। for example आपका human power is also there to propel that vehicle and the fuel power is also there, but you can't call it a hybrid electric, but you can call it as a hybrid because more than one power source is available to propel it। so human effort is also there क्योंकि उसके that vehicle having a pedal, so you can pedal it once your fuel tank is empty, and if your fuel tank is there filled with the fuel, then you can run that vehicle by IC engine also। okay, so two power was there, so you can call this hybrid। here also not only gasoline engine, यहाँ human effort भी हो सकता है या diesel engine भी हो सकता है या fuel cell भी हो सकता है। fuel cell is another thing जिसमें कुछ जो केमिकल होता है वो हम एज अ उसमें एज अ टैंक में स्टोर करके उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। द मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक सेल इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन करते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर जो प्रोसेस होता है उससे वाटर एज अ आउटलेट मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। दैट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन यूज टू चार्ज दिस बैटरी। ओके, सो instead of gasoline we can have a fuel cell over here which can responsible to charge this battery। यहाँ gasoline engine है, that gasoline engine can charge this battery through generator। इस gasoline engine के सामने अगर हमने generator लगा दिया, so that generator will develop the electricity and can charge the battery। और जब तक बैटरी है, बैटरी मोटर को पावर देके ट्रांसमिशन से व्हील घुमाएगा। जैसे ही मोटर बैटरी खत्म हो गया, we can on a gasoline engine and can give a direct drive to transmission। okay, and at the same time we can charge the battery also through generators। so these are the thing कि हम हाइब्रिड में हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है। नाउ प्योर गैसोलीन में क्या हो रहा है, गैसोलीन इंजन है, ट्रांसमिशन है, ड्राइव शाफ्ट है और रोड बेस है। सो वंस योर फ्यूल टैंक इज एम्प्टी, अगेन you are helpless to reach at least to fuel pump। okay, you have to just tow your van till the nearest fuel pump or your home। okay, so this is the thing कि gasoline engine also not
100% रिलायबल थिंग, जो अल्टरनेट पावर सोर्स नीड टू बी देयर। अगर यही आपका गैसोलीन गाड़ी में सीएनजी किट रहता था, सो यू कैन switch to CNG and you can propel your vehicle to nearest the fuel station or the your home. So this is the thing कि hybrid का मीनिंग क्या होता है। अगर ये गैसोलीन टैंक के साथ CNG टैंक भी होता तो हमारा व्हीकल हाइब्रिड हो सकता था, ओके, बिकॉज दैट थिंग गेट पावर्ड बाय more than, sorry, at least two power sources, two energy sources, so you can say that vehicle is hybrid. Okay, the example of hybrid vehicle यहाँ हमने कोट किया था, ICE with the muscular power. So IC engine, your vehicle having a IC engine, as well as you can propel your vehicle by muscular power. Muscular power means human being effort. Human effort से हम उसको propel कर रहे हैं, जैसे मैंने example दिया था इसके पहले कि there are some vehicle was available in Indian market. अभी फिलहाल it is not available. लूना करके नाम था, कैनेटिक कंपनी का वो व्हीकल था लूना करके. So that vehicle, two-wheeler था, that two-wheeler can pedal it. Once your fuel get empty, you can pedal it up to the certain extent. It depends कि आप कहाँ तक pedal कर सकते. So that vehicle get powered by human effort as well as the IC engine. So that can be called as a hybrid vehicle. After that, ICE with the battery, IC engine with the battery. अगर IC इंजन विद बैटरी है तो IC इंजन से आप गाड़ी व्हीकल प्रोपेल कर सकते हो और बैटरी से इलेक्ट्रिक मोटर भी व्हीकल को प्रोपेल कर सकते हो. तो दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज अ हाइब्रिड व्हीकल. बैटरी विद द फ्यूल सेल, बैटरी विद फ्यूल सेल मींस बैटरी है, बैटरी से आप इलेक्ट्रिक जो बैटरी में स्टोर इलेक्ट्रिसिटी उससे मोटर जो रहेगा वो प्रोपेल करेगा व्हीकल को. as well as बैटरी एम्प्टी होने के बाद fuel cell है, that fuel cell will develop the electricity and feed to the motor, and at the same time they can charge the battery. Okay, so fuel cell with the battery also another example for the hybrid vehicle. Okay, so whenever we are talking about hybrid electric vehicles, that time it is we are specifying कि one of the source of that hybrid is electric. Okay, and whenever we are talking only hybrid vehicle, then we are not specifying कि उसमें से जो दो सोर्स हमारे पास अवेलेबल है एनर्जी का, उसमें से इलेक्ट्रिक है या मस्कुलर है या आईसी इंजन है या क्या है, हम नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं. बट हम स्पेसिफिकली जब बोल रहे हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, दैट टाइम वी आर स्पेसिफाइंग कि वन ऑफ द सोर्स जो भी अवेलेबल है वो इलेक्ट्रिक है. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस हाइब्रिड एंड द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल. ओके, नाउ we will go further the classification of the HEVs. Okay, so the HEVs, okay, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फिलहाल, that is nothing but the hybrid technology है, hybrid drive train. Okay, so hybrid drive train जो हम पढ़ रहे हैं, so we must know the classification hybrid drive train का कैसे होता है. So there are three basic things or basic term on which we supposed to classify our hybrid electric vehicle. The first thing which under which we are classifying our hybrid vehicle, that is ड्राइव ट्रेन स्ट्रक्चर. हमारा ड्राइव ट्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, किस वे से ड्राइव ट्रेन चल रहा है. जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट द कन्वेंशनल व्हीकल, हम उसको बोलते हैं चैसिस लेआउट, कि फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल है, रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल है, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव, रेयर इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन रेयर व्हील ड्राइव, जो भी हम उसको बोलते हैं चैसिस लेआउट. वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में ड्राइव ट्रेन का लेआउट होता है या ड्राइव ट्रेन का स्ट्रक्चर होता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ड्राइव ट्रेन स्ट्रक्चर वी आर क्लासिफाइंग आवर HEVs बाय three categories such as a parallel, series and combined HEV. Parallel मतलब we will see this in parallel series in detail further, but just sake of time remember that parallel means the parallelly two sources जो भी रहेगा it can responsible to propel a vehicle. Series means only one source are responsible to propel a vehicle and another source है वो फर्स्ट के लिए एनर्जी डेवलप करने का काम करेगा. combined HEV means सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे उस व्हीकल में. ओके, नाउ सेकेंड क्लास कैटेगरी आता है डिपेंडिंग ऑन द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर टू ट्रैक्शन पावर. मतलब इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ओके, कितने 100% हाइब्रिड है व्हीकल या 50% हाइब्रिड है. जैसे कि एट द वेरी स्टार्टिंग आई टोल्ड यू कि द रिसेंटली ऑन इंडियन मार्केट जो स्कॉर्पियो महिंद्रा का स्कॉर्पियो जो नॉट रिसेंटली वो बहुत पहले से है,
So all those Mahindra Scorpio having basing like a micro hybrid. Okay, Mhawk engine micro hybrid is written over the backside of that Mahindra Scorpio. So that micro is nothing but the start stop technology is there in that vehicle. ओके जैसे कि आई स्मार्ट जो मैंने बोला था हीरो होंडा का जो आई स्मार्ट टू व्हीलर है उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया है स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी जो कि सिग्नल पे आपका व्हीकल ऑटोमेटिकली स्टॉप होता है अगर वेटिंग पीरियड 30 सेकेंड से ज़्यादा हो गया तो एंड आपका व्हीकल आइडलिंग पे रहेगा उस टाइम पे ओके और अपने आप व्हीकल स्टार्ट हो जाए जैसे आप क्लच पे पेडल प्रेस करते हो तो अपना गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा स्टार्टर प्रेस करने का नो नीड ओके सो दिस इज द थिंग कि उसमें 1 to 2% this is not a hybrid but they are putting that technology in the row of the hybrid okay but this is not the true hybrid meaning क्या होता है जैसे कि हमने definition देखा है hybrid vehicle at least have a two energy sources okay so we can't call this is a true hybrid this is a just we can say the one step to the hybrid single step to the hybrid okay so that's why we are term it as a micro hybrid vehicle start stop system उसमें एबल होता है so कितना उस व्हीकल को हम बोलते हैं उस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं माइक्रो हाइब्रिड और इट इज ओनली द 1 to 2% या 5% हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कन्वेंशनल व्हीकल सो डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितना है ऑन दैट बेसिस वी आर कैटेगराइज अवर HEV such as a micro hybrid after that full hybrid plug-in hybrid या power assist hybrid okay so this is the second thing on which we are classifying our hybrid vehicle and the last thing that is depending on the nature of non-electric energy source अभी मैंने क्या बोला this is the HEV is nothing but the hybrid electric vehicle so इसमें से एक एनर्जी सोर्स तो इलेक्ट्रिक है बट दूसरा एनर्जी सोर्स किस टाइप का है ऑन दैट बेसिस वी आर क्लासिफाइंग फ्यूल सेल टाइप है सेकेंड हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक पावर है या ह्यूमन पावर है या आइस पावर है कंबशन इंजन है उसमें सो ऑन दैट बेसिस 1 2 3 4 सो 4 सब कैटेगरी आता है कि सेकेंड जो नॉन इलेक्ट्रिक पावर सोर्स है वो किस टाइप का है आईसी इंजन है या फ्यूल सेल है हाइड्रोलिक पावर है या न्यूमेटिक पावर है या ह्यूमन पावर है so on that basis we can classify it okay so till here we have studied that what is the meaning of hybrid and the classification of hybrid okay